So very good evening, my dear students. So today I'm going to start with the topic called Organism and Population, though today is going to be the last class of this chapter. So आज जो करेंगे वो last part पढ़ेंगे, that is we are talking about the population interaction. So last day also, if you remember, in the last very class there was some technical problem, and before that the class that I took, we have already covered mutualism. We have covered mutualism. And I think one or two topics we have already covered. So let us start with a topic called competition. I think I'm going to start with the topic called competition. So just to recapitulate whatever we have done, क्या क्या हमने कर लिए इस चैप्टर से, थोड़ा recapitulate कर लेते हैं. First, what we have talked about from this chapter? We have talked about population density. We have talked about population density. I'm not using the board work right now. Population density. Population density is represented by N. And how many factors which helps the population density to remain, to maintain it. Like we know that, what is that? dn t plus 1 is equal to n t plus b minus b plus I, that is birth rate, that is natality, plus immigration minus mortality, that is death rate, plus immigration, plus E. So that's what we have studied. And also we have studied about what are the population growth model. The population growth model कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. Number one, the population growth model can be logistic type, logistic growth model. Number two, the population growth model can be exponential model. Fine. So one is logistic and the one is exponential. Now where in one there is dn dt is equal to Rn. And what is R? R is the intrinsic rate of increase. Fine. Where there is no k factor. But when we talk about exponential growth factor, there is dn dt is equal to Rn k minus n by k. What is k? K is the carrying capacity. बाबू ये तो आप जानते हो. But उसके बाद जो टॉपिक पढ़ा गया था वो था क्या? R selected and K selected species. In the topic called life history variations. R selected species are what? R selected species are those species which are having short lifespan, and they can give rise to large number of progeny. They are short sized, and also they have got short lifespan. Fine. So small sized, short lifespan, and also they can give birth to large number of progeny. So we call them as R selected. ठीक से सुनो क्योंकि questions करना है आज. We are going to solve some questions. Fine. So okay. And what is K selected? Just opposite of that. That is, in K selected species, they are large sized with a short lifespan, and they can reproduce throughout their life with small number of offsprings, less number of progeny. That is K selected species. उसके बाद जो टॉपिक आपके इस चैप्टर में है, and that is about population interaction. So there are population interactions. When we talk about population interactions, तीन तरह के population interaction होते हैं. One is positive, and one is neutral, last one is negative. So positive मतलब अगर दो species के अंदर जो interaction होता है, the interaction between two different species where benefit हो रहे हैं. In one side, in one species is being benefited by the other. So we are going to talk about under that positive interaction, the first one which comes as mutualism. अगर याद है आप लोगों को mutualism के कुछ example, if Devika, try with some examples that we have talked about mutualism. Number one, which comes in our mind, number one is lichens, जो class 11 से पढ़ते आ रहे हैं. Mycobiont and phycobiont. So what is mycobiont? The fungal component. What is the phycobiont? Algal component. Both of them together are lichens. Lichens are the symbiotic association between algae and fungi, where algae provides food, because algae में क्या है? Algae, they have got chlorophyll. Fungus, they provide shelter. So both of them, they are
one particular organism which we call it as lichens. And lichens pollution. They are also called as bioindicator of air pollution. Fine. So wherever there is sulfur dioxide emissions, you are not going to get what? Lichens over there. So यहाँ तक clear है? ये first example था lichens का. What is the second example? Try दिया. Basket. Yes. Venus basket. Venus flower basket. Venus flower basket. Yes. ये class 11 में पढ़े थे आप. Euplectella. Venus flower basket, the common name of Euplectella, which is a sponge. And within this spongocele cavity, some shrimps, they remain inside, they get the shelter. They get the shelter. Clear? Now, so one is getting shelter, other one is getting what? Protection. Other one is getting protection. So this kind of relationship is called mutualism. It's called mutualism. So this is the second example. Let's talk about the third example. Mycorrhiza. Mycorrhiza. So when we talk about mycorrhiza, how we are going to remember it? By PM, Prime Minister. Pinus mycorrhiza. So the roots of Pinus, they have got mycorrhiza. That means they have got fungus associated with them. So the roots, what happens to the roots? The surface area of the root is being increased, and also mycorrhiza. What is the specialty that you have studied in class 12? In the last page of the chapter, microbes in human welfare. They can absorb phosphorus. Mycorrhiza can absorb phosphorus. Last page of the chapter, microbes in human welfare. You can see mycorrhiza is over there. The third line of that last paragraph, you can see they can absorb phosphorus. This was third example. Fourth example, Devika. Fourth example is about cycas and coralloid roots. The cycas, which is again a gymnosperm, they have got what? They have got some roots which we call it them as coralloid roots because they are infested with blue-green algae, cyanobacteria. So again in the last page of this microbes in human welfare, you can see three names being given: Anabina, Nostoc, and Oscillatoria. They are blue-green algae, and what they can do is they can fix atmospheric nitrogen. They can fix atmospheric nitrogen. This is the fourth example. Let's talk about the fifth example, which is there in your book, in the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant. Number one, yucca and yucca plant with pronuba moth. So moth, they get oviposition, they get the place to lay eggs. This is about moth. And yucca, in order, yucca, what yucca plant gets, it's a pronuba moth acts as a pollinator. So by default, the pronuba moth helps in pollination. This is the fifth example. Sixth example is about hermit crab. No. That is commensalism. The sixth example is about Ophrys, Mediterranean orchid and Ophrys. That is Mediterranean orchid, that is Ophrys, and bumblebee, male bumblebee. Pollination. And also sexual deceit is the term. So bumblebee comes and considers the particular one of the petal of the Ophrys orchid plant as a female bumblebee, and they pseudo-copulates. So what is the term? One is pseudo-copulation, sexual deceit, and also we can get in this mutualism, what is the term that we can get is co-extinction or co-evolution. Co-extinction or co-evolution. This is the sixth example. What is the seventh example? Azolla and Anabina. Azolla is what? It's a fern. It's a pteridophyte. And Anabina kya hai? It's a cyanobacteria. So Azolla gives shelter, Anabina helps them in nitrogen fixation. So these are the 7 examples, and the 8th example, last example, is about fig and wasp. Fig and wasp. Fig and wasp, no. Yes, oviposition. So the wasp, they get inside the fig body by pouring it, by making some pour. They get inside. While getting inside, the wings and the legs goes off. They get inside, lay eggs, and they die inside the fig, and they get completely absorbed by the fig. And the larva gets nourishment from the fig.
Got the point? So this is about fig and wasp. The 8 example that we have talked about mutualism. In mutualism, ये कैसा relationship है? Positive, positive. Both of them are mutually being benefited. The second example that we have talked about is about commensalism. Devika, have you completed commensalism? Commensalism. And what is commensalism? One is positive and the one is negative. One is positive and the one is negative. So this is about commensalism. One is positive and the one is, sorry, not negative, 0. Neither being benefited nor being harmed. Neutral. So what is neutral? So in that commensalism, what is the best example? Commensalism, have we talked about that? Egret and cattle. Very good. In commensalism, let me find that so that I can help you out. One is egret and cattle. Egret bird and cattle. Egret bird and cattle. To solve competition today? Yes. I think commensalism we have done in the last class because the positive. Orchid or cattle? Yes. Mango is also the example. This is about parasitism, predation, commensalism. One is orchid and mango. So orchid. So the example is about epiphytes. 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 So on the mango tree, the orchid plant, this sits over there. Now my question to you, if you remember, they are called epiphytes. Epi matlab upar, above a plant body. So can you just tell me what is there are some hanging roots which can absorb moisture. Can you tell me what is the type of tissues present over there which helps in absorbing moisture from the air? Which can help in absorption of moisture from the air. What is that? What is a velamen tissue? Velamen, write it down. Velamen, V-E-L-A-M-E-N. Velamen tissues are present inside. Velamen tissues are present inside these roots, which can help in absorption of moisture from the air. Clear? Very good. Next is what? Whale and barnacles. Who is being benefited? यहाँ पे कौन benefit हो रहा है? Mango या orchid? Mango जानता ही नहीं है orchid उसके ऊपर है. So for mango it is 0. For orchid it is positive. When we talk about whale and barnacles, whale it's 0. वो जानता ही नहीं है उसके साथ लगा हुआ है. Barnacles they positive for them. Grazing cattle and tissue ta velamen, V-E-L-A-M-E-N. Velamen tissues. V-E-L-A-M-E-N. Velamen tissues. Okay? So epiphytes, they have got velamen tissues which can absorb moisture from the atmosphere. Grazing cattle and cattle egret. Egret bird, they graze, they remain close to the grazing cattle. क्या लाभ होगा उससे? When the cattle they start grazing, they uproot while eating up the grass, they uproot that plant, the grass, and all the insects present inside associated with the roots, they are going to come up, and egret bird is going to feed on them. So किसको खाना मिल रहा है बाबू? Egret bird को खाना मिल रहा है, cattle से उसको कुछ लेना देना नहीं है. Cattle, for cattle it is 0, but for egret bird it is positive. Sea anemone and clownfish, very very important example. Sea anemone, they are slow movers but they have got tentacles, because sea anemone कौन से phylum में आता है? It comes under phylum Cnidaria. It comes under phylum Cnidaria. So you know what? These tentacles, the tentacles, by the help of tentacles, the clownfish gets protected. So clownfish gets survival edge. But sea anemone को कुछ मिल रहा है इसमें से? नहीं. So किसके लिए positive है? For clownfish it is positive, for sea anemone it is 0. So these are about commensalism. So positive and 0 is commensalism. We can also add another example. Tell me the example: hermit crab and sea anemone. Hermit crab and sea anemone. कौन fast mover है? Hermit crab is a fast mover. Sea anemone sits at the back of the hermit crab, and while sitting, they secrete some chemical at the back of the crab, and that smell is so obnoxious smell that the hermit crab gets a survival edge, because the predator of hermit crab comes down to feed on the hermit crab. The moment they find that particular chemical, they don't eat them. They prefer not to eat them. Got the point? So who is getting survival edge? Hermit crab. What about sea anemone? 0. This is again an example of
Commensalism. The 5 examples we have talked about commensalism. So very, very important one. So we have talked about this. Commensalism we have talked in the last classes, I think. Yes, mutualism is over. Mutualism also we have done. It's very, very important. Mutualism is very, very important. Yes, let us start with today's topic, that is about competition. Very, very important. And after we finish up with this, we need to solve some of the questions. So it's very, very important that you completely give all your, see, this is Gauss's exclusive competitive exclusion principle is very, very important. Yes, competition. We're going to start with the topic called competition today. चलो यहाँ से start करते हैं. Yes. Competition. So what is competition? Now you are in that stage. You are competing with your good friend to get that seat. Competition is the best defined as a process in which the fitness of one species measured in terms of its R. What is R? Who is going to tell me what is R? What is R? R क्या है? What is R? What is R? Reproductive fitness. What is R over here? Now don't tell me R is the intrinsic the rate of we are not about that R now, because we are talking about when Darwin he said what? Reproductive fitness of an organism. Darwin talked about reproductive fitness of an organism. When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is potent force in organic evolution. देखो क्या बोला था उन्होंने? Interspecific competition. What is the meaning of interspecific? You are into interspecific or intraspecific competition? एक मेडिकल सीट के लिए आप लोग फाइट कर रहे हो, है ना? 2 जन फाइट कर रहे हो. आपका दोनों का स्पीसीज सेम है या डिफरेंट है? You are missing Adrito in the class right now. Okay. Now, otherwise we have made him chimpanzee and you as a human being. So in that case, let us consider he is in my class only. Now think about it. So the competition is between intraspecific, is not between 2 different species. So it is interspecific competition is a potent force in organic evolution. Who said it? Darwinism. क्यों? इंटरस्पेसिफिक मतलब 2 डिफरेंट स्पीसीज में. तो कौन जीतेगा जिसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है वो जीतेगा, है ना? ओके. इट इज जनरली बिलीव्ड दैट competition occurs when closely related species compete for the same resource. So resource क्या है? Resource same है. In a forest ecosystem, they are give one example of some grazer in forest. जिसका नंबर ज्यादा है, deer. And also the competitor of deer is buffalo. अब दोनों में कंपटीशन हो रहा है क्या खाने के लिए? ग्रेजर. क्लियर? सो बफलो और डियर का खाना दोनों सेम है. जस्ट लाइक दिस एग्जांपल वी आर गोइंग टू गेट इज अबाउट Abingdon tortoise and in Galapagos Island and goat. We want to talk about that. Very, very interesting one. Okay. तो दोनों का सेम रिसोर्स है. डाटा लिमिटिंग. क्या रिसोर्स क्या है? लिमिटिंग है. रिसोर्स बहुत ज्यादा है बाबू. लिमिट है ना? मेडिकल का सीट ज्यादा है कम है? कम. एस्पिरेंट ज्यादा है? सीट कम है या सीट ज्यादा है एस्पिरेंट कम है? So limiting, got the point? What is called limiting? So what is always limiting? K factor is always limiting resources. But this is not entirely true. There are 2 interferences. चलो क्या देख लेते हैं? Unrelated species. Totally unrelated species could also compete for the same resources. For instance, in some of the shallow South American lakes, बहुत important example है ये. Shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food. क्या है common food? Zooplankton in the lake. Now tell me, Shmuti, zooplankton का position कहाँ पे है in aquatic ecosystem? Are they producer or they are primary consumer? They are primary consumer. Consumer because phytoplanktons are the main producer. Phytoplanktons being eaten up by zooplankton. Zooplankton is being eaten up by small fish, and large fish feeds on small fishes. So, okay, for the common food, the zooplankton in the lake. तो दोनों के अंदर क्या हो गया? ये कैसा
रिलेटेड है या अनरिलेटेड है? फ्लैमिंगो एंड रेसिडेंट फिश, बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड और अनरिलेटेड? कंप्लीटली अनरिलेटेड, बट खाना सेम है उनका, ठीक है? व्हाट इज द खाना? जू प्लैटर इज द खाना। ओके चलो, अनलिमिटेड रिसोर्स, ये अनरिलेटेड स्पीसीज था। द सेकेंड वन, अनलिमिटेड रिसोर्स। सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटेड फॉर कंपटीशन टू ऑकर। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, क्या कंपटीशन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहे, इंटरफेरेंस कंपटीशन। व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन वी आर टॉकिंग अबाउट? इंटरफेरेंस कंपटीशन। एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखो, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, very very important, star mark, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources and space are abundant. Clear? In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced. एक जन का feeding efficiency क्या हो सकता है? Reduce हो सकता है ड्यू टू द इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। अदर स्पीसीज आ जा रहे हैं, इसलिए इसका एफिशिएंसी ऑफ हैविंग दैट फूड इज रिड्यूसिंग, इवन इफ फूड एंड स्पेस आर एबंडेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन इज दिस? फूड ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, फिर भी एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फूड एफिशिएंसी। फूड एफिशिएंसी इज गोइंग टू रिड्यूस ड्यू टू व्हाट? Due to inhibitory effects of the other species. ठीक है? That is called interference competition. Very very important. So competition का एक type मिला आपको. What is the type? Interference competition. अच्छा, example of competition में क्या हो जाएगा? Flamingos and fishes, abundant tortoise and goats. कहाँ पे? In Galapagos Island. We are going to study that. Galapagos Island famous for what? आप लोग जानते हो Galapagos Island? Darwin. HMS Beagle, Darwin Finches. What is the ship? HMS Beagle. But that Galapagos Island is only named after abundant tortoise. So they were predominant. But जब human पहुंच गए आइलैंड में, तो उसने क्या छोड़ दिया वहां पे? गोट। दोनों का खाना क्या है? सेम है, ग्रास है। तो बोलो क्या करेगा? कौन जीतेगा खाने में? गोट जीत जाएगा, क्योंकि वो स्टॉप फास्ट है, वो स्टॉप नहीं करता है। गोट, बंगाली में क्या कहते हैं उसको? छागोल। वो गाली है। क्यों छागोल कहते हैं? क्योंकि वो रुकना जानता नहीं है। उसको मम्मी ने नहीं सिखाया, बेटा या बेटी, बेटिया थोड़ा बोल देना कि और नहीं खाएंगे, तो ये फैक्टर बंद है उनमें। सो दे आर वोराशियस फीडर। खाना मिल गया, ग्रास मिल गया, चलो इधर से साफ करते रहो। एंड व्हाट हैपेंड? abundant tortoise, they got a strict competition, strong competition. And what happened from Galapagos Island? Extinct. Abundant tortoise got extinct. So that is what barnacles, balanus. अच्छा, balanus ये competitive और ये लार्जर है, और ये बार्नाकल क्या नाम है इसका? चैथामलस। वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस टू, वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस टू। ये भी एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। चौथा देख लेते हैं, गॉशेस कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये चैप्टर से, यहां से यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम गॉशेस कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या लग रहा है सुनने से? कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कौन किसको एक्सक्लूड करेगा? स्मृति, इफ यू आर हाईली कंपैरेटिव ओवर दिया, कौन रूल करेगा यहां पे? स्मृति इज गोइंग टू रूल। सो आपने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया उसको, बिकॉज यू आर कंपैरेटिवली व्हाट? सुपीरियर। Okay, got the point. So it states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely. Now Devika, tell me, what is the meaning of indefinitely? For long. Because क्या हो जाएगा ना कि एक्सटिंक्ट हो जाए, रिसोर्स इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। रिसोर्स को मैं रिसोर्स अगर घट गया तो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक आप तो कंपीट नहीं कर पाओगे ना। समझ में आया क्या? सी, एंड द कंपैरेटिवली इंफीरियर स्पीसीज विल बी
एलिमिनेटेड इवेंचुअली। सो जो इंफीरियर है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज क्या ज्यादा नहीं है, व्हाट इज रिसोर्स इज नॉट मोर, सो रिसोर्स इज लिमिटेड। ओके, दिस मे बी ट्रू, उसको क्या कहते हैं, गॉसियस कंपैरेटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। ऐसा हो सकता है रिसोर्स अनलिमिटेड है? हाँ हो सकता है सर। एक न्यू फॉरेस्ट है अमेज़न में, एक न्यू फॉरेस्ट आइलैंड बना है और वहां पे कोई अदर एनिमल नहीं है, वहां पे 2 रैबिट को अपने वहां पे रख दिया और ग्रास, इतने सारे ग्रास हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू शो ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ। रिमेंबर while helping you with that topic called exponential growth curve, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में क्या था, dn dt is equal to dn dt is equal to rn k minus n by k. What is k? K is the carrying capacity. उस न्यू फॉरेस्ट में 10,000 रैबिट तक सपोर्ट कर सकता है एंड यू हैव इंट्रोड्यूस्ड ओनली 2। उसके लिए बोलो 10,000 रैबिट को सपोर्ट कर सकता है, दैट फॉरेस्ट कैन सपोर्ट 10,000 रैबिट्स एंड यू हैव इंट्रोड्यूस्ड ओनली 2। दैट मींस के फैक्टर बहुत ज्यादा है। कितना फैक्टर है? 10,000। तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? टिल द टाइम दैट n is equal to k, k is equal to n। तो अगर k is equal to n है, so n minus n by k is equal to 0, so तब क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। what is going to happen till the time they reaches the k factor, क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा। एंड व्हेन दे आर गोइंग टू शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अल्टीमेटली बिकम्स व्हाट, क्या जाएगा, ये एस्टिमेट ग्रोथ कर्व। ये हो गया, दिस फ्रॉम दिस टू दिस इट विल शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड दिस इज कॉल्ड asymptote। क्या कहते हैं इसको, asymptote। See, we have already completed this topic, that's why just I'm giving you the idea. Asymptote मतलब when k is equal to n, when n is equal to k और k is equal to n, तो क्या हो जाएगा, asymptote हो जाएगा। क्लियर? Okay. This may be true if the resources are limiting, but not otherwise. Laboratory experiments done by Gauss and other experimental ecologists demonstrate that when resources are limited, है ना, when resources are limited, कौन जीतेगा? Comparatively superior. Comparatively superior species will eventually eliminate किसको? The other species. If the resources are less limited. If the resources are less, then जो comparatively superior है is going to eliminate the inferior ones. Strong and persuasive circumstantial evidence does exist in some cases. अच्छा देखो आ गया Abingdon tortoise. So आपके सामने क्या गया, Abingdon tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goat. Greater browsing efficiency of the goat, है ना। किस सेरेमनी में जाने के बाद जो स्टार्टर, you have seen your efficiency, चिकन पकौड़ा, है ना, आते आते ही खत्म हो जाता है। सो देन यू अंडरस्टैंड योर एफिशिएंसी, है ना। सो दैट इज इट। सो Abingdon tortoise, कम ऑन, व्हाट इज दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रहोगे। वी आर स्टडिंग दिस अंडर कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। वी आर स्टडिंग विच टॉपिक, कंपटीशन। So in competition you have to remember there is another C called Cornell's elegant field experiment. ठीक है, Cornell's elegant field experiment. Cornell's elegant field experiment. Okay. Okay. See, no, see the sound is coming or not. अच्छे, no technical problem today. चल रहा है ठीक ठाक, हो रहा है आवाज देखो। ओके चलो, that's it. Cornell's elegant field experiment. Cornell's elegant field experiment shows that on the rocky sea coast of Scotland, कहाँ पे? Scotland. याद रखना, there is no other way out. अब रॉकी सी कोस्ट ऑफ आप दीघा कर दोगे तो प्रॉब्लम है। अच्छा, दीघा में रॉकी नहीं है, ठीक है। रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड
द लार्जर एंड कंपेरेटिवली सुपीरियर बार्नाकल, देखो कंपेरेटिवली सुपीरियर बार्नाकल इज बैलेनस, इज सो सुपीरियर कौन है? किसके ऊपर सुपीरियर है? चैथामलस। कैसे याद रखोगे? बी आगे आता है देन सी, बी आगे आता है देन सी। सुपीरियर कौन है? बैलेनस। इंफीरियर कौन है? चैथामलस, चैथामैलस, चैथामैलस, ठीक है, ओके, चैथामलस। सो एरिया एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्नाकल, किसको एक्सक्लूड कर दिया? चैथामलस को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम दैट जोन। क्या हो गया? Barnacles are present on the whale's body. Just now I have said, white color के उसके body के ऊपर चिपक के रहते हैं. Fine, so they are barnacles. Competitive release. What is that? Another evidence for the occurrence of competition in nature comes from the competitive release. क्या ये? A species whose distribution is restricted to a small geographical area. हर एक जगह में नहीं मिलता है. Some of the species they are present only in the small geographical area. Because of the presence of comparatively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. बोलो समझ नहीं आया? What is the meaning of competitive release? इसका example है, we are going to study about this example. So if there is one superior competitor और उसके प्रेजेंस में क्या होगा? जो inferior competitor है उसका क्या होने वाला है? Elimination होगा, हाँ? पर सुपीरियर कंप्यूटर किसको खा रहा था? इंफीरियर कंप्यूटर को खा ले रहा था, से फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा अगर आप इसको सुपीरियर को वहां से हटा देते हो? ऐसे बहुत सारे इंफीरियर स्पीसीज देयर नंबर इज गोइंग टू ग्रो और देयर नंबर इज गोइंग टू कम डाउन। ग्रो। इफ देयर नंबर ग्रोज, उनमें खुद में कंपटीशन होगा नहीं होगा? एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बोलो, तो उसमें क्या हो सकता है? कुछ स्पीसीज, यस, उनमें कंपटीशन हो जाएगा रिसोर्स के लिए। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। बट एविडेंसेस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। एक एग्जांपल है बुक में, मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस generalizations of Gauss's exclusion principle about competition, while they rule out the occurrence of interspecific competition in nature. They point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. बोलो समझ में नहीं आया तो पूछो। Exclusion is not, nature never wants this. Nature क्या चाहता है? देखो, नेचर वांट्स ऑल ऑफ यू टू सर्वाइव। अगर नीट में नहीं हुआ तो क्या पढ़ोगे? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, बायो फार्मेसी पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? हाँ पढ़ोगे सो पढ़ोगे। सो नेचर क्या चाहता है? नेचर चाहता है एक्सक्लूड नहीं करना। नेचर एक्सक्लूड नहीं चाहता है। नेचर वांट्स एवरीवन शुड सर्वाइव। और उसमें क्या चाहिए? कोएग्जिस्टेंस। बोलो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करोगे आप, या गोइंग टू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, एंड अल्टीमेटली आप हेल्प कर रहे हो डायरेक्टली इन मेडिसिन डिपार्टमेंट कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, पर इनडायरेक्टली कर रहे हो आप। डॉक्टर बनने से आप डायरेक्टली टच हो जाते हैं पेशेंट के साथ। पर वो जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मीन्स यू आर हेल्पिंग द डॉक्टर विद ऑल दोज स्पेसिफिकेशंस, ऑल दोज अल्ट्रासोनोग्राफी कौन सा मशीन से करोगे, किसमें क्या क्या होना चाहिए, व्हाट आर द प्रोब्स शुड बी देयर, है ना? वो सब किसका काम है बाबा? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो उसका काम है। तो क्या बोल रहे हो आप? डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या है? डॉक्टर को तो गवर्न कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो ना उसको। कोएग्जिस्टेंस। सो व्हाट यू हैव चूजन, व्हाट नेचर चूजेस rather than exclusion, nature goes for what? Coexistence. इसका हिंदी में बोलो, हम साथ साथ हैं, है ना? हम साथ साथ। मूवी था, यहीं से आया था, कोएग्जिस्टेंस आया था। बोलो समझा? हाँ, क्लियर? चलो, वेरी गुड। नाउ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अवॉइड। बोलो ये समझ में आया क्या? सो गॉसेस कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नेचर चाहता है नहीं चाहता है?
पर होता नहीं होता है, होता है। बट नेचर, इफ यू आस्क नेचर, अगर नेचर से बात करो तो नेचर क्या, उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है? को एग्जिस्टेंस। इसके लिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्टडीज अगेन अबाउट सम वॉबलर्स, पढ़ेंगे थोड़ा सा, देखना, ठीक है। रिसोर्स पार्टीशन, सो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अवॉइड कंपटीशन बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग, बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग, बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग। व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग? रिसोर्स को पार्टीशन कर लो। एक पेड़ है, एक पेड़ है, बोलो एकदम नीचे की तरफ द स्मॉल बर्ड्स आर गोइंग टू मेक देयर नेस्ट, मिडिल में मिडिल साइज, मिड साइज, एकदम टॉप में द लार्ज साइज वल्चर इज गोइंग टू मेक देयर नेस्ट। अब सोचो इस पेड़ में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट, वी कॉल देम एज वॉबलर्स। तो उन्होंने क्या सोचा, पेड़ ही उनके लिए खाने का रिसोर्स है, तो डिफरेंट टाइमिंग कर लेते हैं ना खाने का, डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न। नेचर ने क्या दे दिया उनमें? डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न। किसी भी हॉस्पिटल के बाहर what you can see is some of the pharmacy, you can see many of the pharmacy, Das pharmacy, Shaha pharmacy, Devika title, Roy pharmacy, दिया, हाँ, Sen pharmacy। अब ये Sen pharmacy keeps all those you know what medicines which are emergency medicines, मतलब आईसीयू में वो मेडिसिन चाहिए, इंजेक्शन का दाम है 6,000, 10,000, 8,000, एक इंजेक्शन का दाम है। तो ये सेन फार्मेसी ये रखता है। रॉय फार्मेसी एंटी गैस, ठीक है। अब सोचो ये चारों कैसे जिएंगे वहां पे, कैसे? अगर सेम फार्मेसी वो एंटी गैस का टैबलेट रख दिया, लाइफ सेविंग ड्रग छोड़कर, लिसन टू मी, लाइफ सेविंग ड्रग छोड़कर अगर सेम फार्मेसी भी अगर एंटी गैस का टैबलेट रखता है, सो हु इज गोइंग टू बी इन स्टिफ कंपटीशन? रॉय। इन्वेस्टमेंट किसका ज्यादा है? सेम फार्मेसी। तो इन्होंने चार फार्मेसी मिलकर बात कर डिसाइड कर लिए, बाबा आप लोग ये इस तरह के मेडिसिन रखोगे, हम नहीं रखेंगे। पर अगर आपके पास ये पेशेंट आ जाता है आस्किंग फॉर लाइफ सेविंग ड्रग, आप किसको दिखाओगे? गो टू सेम फार्मेसी। बोलो समझ में आ रहा है? हो गया ना, रिसोर्स पार्टीशन हो गया। यहां पे रिसोर्स क्या था? पेशेंट्स, मरीज। वेरी गुड, क्लियर। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग, इफ टू स्पीसीज competes for the same resource, they could avoid competition by choosing different times for feeding। देखो टाइम चेंज कर दिया, मैं 2 बजे से 4 बजे तक, आप 4 से 6 बजे तक, तो उस समय मैं नहीं खाऊंगा। गॉट द पॉइंट? फोरेजिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंशिएट फोरेजिंग पैटर्न। इन नीट 2021 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा। मैकार्थर shows that 5 closely related species of warblers, देखो, living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavioral difference in their foraging activities। बोलो, avoid what? Avoid competition। और क्या, what they have chosen? They chose to coexist, not competition। Clear? By what? By changing their foraging patterns। So that is very very important about warblers. They are birds, warblers, very very important। And mind you, the name of the scientist is MacArthur। Clear? Mind you, population interactions both important है from this topic, from this chapter। Population interactions you can expect questions not only in your board but also in your NEET examinations। In general, herbivores and plants appear to more adversely affected by competition than carnivores, है ना? Carnivores तो नहीं खाएंगे ये। So herbivores will be having, you know, herbivores are much more adversely affected by this relationship between herbivores and plants। Carnivorous animals, lions and leopards occupy the same niche। Now who is going to tell me what is the meaning of niche? ये क्या है niche? What is the meaning of this? We call it ecological niche। निश, नीचे मत कर दो, ये नीश है, ये नीश है, इकोलॉजिकल निश। सोचो गर्मी के समय ऐसा कभी हुआ, ये आपके घर में फैन है,
अच्छा हुआ फैन। अच्छा ये खटिया है, खटिया के ऊपर आपके बहन है और अच्छा बोलो गर्मी के समय कहाँ पे ज्यादा ठंड है? खटिया के नीचे, खटिया के ऊपर? नीचे ठंड है कंपैरेटिवली। तो दोनों में मारपीट हो रहा है, दो बहना दोनों में मारपीट हो रहा है, एक जन नीचे एक जन ऊपर, ठीक है। किसको इफ यू आस्क बोथ ऑफ देम आप लोगों का हैबिटेट क्या है, व्हाट इज योर एड्रेस? हैबिटेट मतलब एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दोनों क्या बोलेंगे? हमारा रूम। बट बोथ ऑफ देम दे हैव मेड देयर माइक्रो हैबिटेट। एक बोल रहा है मैं खटिया के ऊपर और एक जन क्या बोल रहा है? उसमें नीशे, हाँ वो नीशे है, इकोलॉजिकल niche called microhabitat. Just like that, in class 9, I think you have heard about composite. You have studied about composite fish farming. Remember, pond है. Yes, pond में ये ऊपर कौन है? Who is the surface feeder? Katla is surface feeder. Rohu is middle feeder. Mrigala is बॉटम फीडर। तीनों को क्वेश्चन करो आप लोगों का हैबिटेट क्या है, क्या बोलेंगे? वाटर बॉडी। बट तीनों ने क्या बना लिया अपना? 3 of them they have made their own ecological niche. Got the point? So carnivorous animals, lions and leopards occupy the same niche, but lions predate mostly larger animals and leopards take smaller ones. देखो है ना, वो तो टीम बनाए, सबको बुलाया और गोल टेबल मीटिंग हुआ कि देखो आप हाँ गोल टेबल मीटिंग, हाँ है ना। और देखो आप लोग कोशिश मत करो क्योंकि वो कर भी नहीं पाएंगे ना। एक बफेलो को पकड़ेंगे, लेपर्ड सोच ही नहीं सकते हो आप, लेपर्ड तो उसको मार्स में भेज देगा। गॉट द पॉइंट? सो दैट इज इट। सो दिस इज व्हाट। सो दो दे बोथ ऑफ देम दे ऑक्युपाई द सेम niche, but lions predate mostly large animals and leopards smaller ones. Okay, this mechanism is referred to as resource partitioning. बोलो इसका हिंदी में चेंज करो। हम साथ साथ तो नहीं होंगे ये। बंटवारा। समझ में आया क्या? रिसोर्स को पार्टीशन करो, रिसोर्स को पार्टीशन करो। गॉट द पॉइंट? ओके चलो। नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो पैरासिटिज्म, द नेक्स्ट वन इज पैरासिटिज्म। आई थिंक आई हैवंट कंप्लीटेड इट। पैरासिटिज्म नहीं हुआ था ना? पैरासिटिज्म बोलो। पैरासिटिज्म सबसे अच्छा एक क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन विच इज क्वाइट कॉमन इन नेचर। इज इट पैरासिटिज्म और प्रीडेशन? कॉमन बोलो। टेल मी द फेमस एनिमेशन, जब छोटे थे तब एनिमेशन फेमस है, टॉम एंड जेरी। रिलेशनशिप बोलो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टॉम एंड जेरी? हु इज टॉम? कैट। जेरी इज माउस। दोनों का रिलेशनशिप क्या है? प्रीडेशन। कैट इज गोइंग टू प्रीडेट ऑन माउस। दैट इज इट। ये कोई वो तो दिखाया एक दिन जेरी के पीछे नहीं लगा तो जेरी को प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसको एलियो कर, कम ऑन क्या कर रहे हो, सो रहे हो। गॉट द पॉइंट? सो ओके, पैरासिटिज्म इज नॉट कॉमन, बट व्हाट इज कॉमन इज मोस्ट कॉमन इज प्रीडेशन। वी विल टॉक अबाउट दैट। पैरासिटिज्म, व्हाट इज पैरासिटिज्म? फाइन, टेल मी होस्ट एंड पैरासाइट। आपके बॉडी में है पैरासाइट? स्मृति कंफर्म नहीं है? ओ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पैरासाइट है? आई क्विट बायो। ठीक है, नो इश्यूज। If you are having worms like Ascaris lumbricoides, Ascaris lumbricoides, सब में है ना? Ascaris is that is ectoparasite. You're talking about Ucunis, वो ectoparasite है, but endoparasite is Ascaris. So Ascaris के लिए उसको क्या मिल रहा है? उसको शेल्टर मिल रहा है, एंड शेल्टर खाना मिल रहा है, उसको फूड मिल रहा है। आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। This is the relationship between you and parasites. Parasites getting food, you are being harmed.
So this is called positive and negative. Positive and negative. Parasitism is interaction in which one organism parasite obtains food directly from another organism, that is host. कौन है? Host है. Parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates because parasitic mode of life ensures free lodging and meals. देखो parasite को क्या मिल रहा है? Free lodging and free meals. कुछ कॉमन है आप में? फ्री लॉजिंग, लिसन टू मी, फ्री लॉजिंग एंड फ्री मील मिलता है घर में? लॉजिंग फ्री नहीं मिलता है, काम करना पड़ता है. कौन बोल रहा है? सो यू आर परफेक्ट पैरासाइट. आर यू पैरासाइट? अपने घर में पैरासाइट बोलो ना. स्टिल टेल मी. So what is the best example of parasite? Are you parasite? Parasitism is a type of population interaction between two different species. आप और आपके पिताजी, तो आप बच गए. आप और पिताजी दोनों सेम स्पीसीज के हैं. And what are parasites? Parasites are those organisms which depends upon host body for food, shelter and reproduction. अब ये रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना तो आदि तो नहीं है आज, तो we cannot talk about that. So imagine he is here. So अगर वो बोलता है घर में कि ठीक है फूडिंग लॉजिंग ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, शादी भी करेंगे तो पिताजी के पैसे से, और पिताजी को बोल दिया खाना आप ही को खिलाना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट पैरासिटिज्म हुआ. तब भी वो बच गया, ही सेफ. क्यों सेफ है? सेम स्पीसीज है. So parasitism cannot take place between same species. Got the point? Because population, it's a type of population interaction where two different species has to be there. Okay. Parasitism are of two types: ectoparasites and endoparasites. ecto मतलब आपके बॉडी के ऊपर, एंडो आपके बॉडी के अंदर, एंडोपैरासाइट्स. ओके ओके चलो नेक्स्ट. Parasites that feeds on the external surface of the host organisms, आगे आपका हुकुन, are called ectoparasites. Lice on humans, ticks on the dogs. देखा कभी डॉग के ऊपर टिक्स देखा ना? Many marine fish are infested with ectoparasite copepods. क्या नाम है इसका? Copepods. Many marine fish are infested with ectoparasite called copepods. Okay, Cuscuta is a parasite, ectoparasite on a plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in course of evolution. It derives nutrition from its host plant. Cuscuta is a total parasite. क्या है? Cuscuta. Clear? Very good. Now, parasites that live inside the host body are different sites. That is liver, kidney. बोलो तो liver में एक ectoparasite, and you know that. The moment I will tell you, बोलोगे आप 11 पे हो गया था. हाँ हम जानता हूँ. Tell me, liver. It starts with some liver fluke. Very good. Liver fluke comes under which phylum? It belongs to which phylum? Platyhelminthes. What is the scientific name of liver fluke? Scientific name of liver fluke is Fasciola hepatica. Fasciola hepatica. Liver fluke. Okay. Lungs, RBCs. RBC के अंदर एक पैरासाइट का नाम बोलो. आरबीसी के अंदर पैरासाइट का नाम बोलो. इट्स देयर इन योर क्लास 12 टॉपिक. प्लास्मोडियम. वेरी गुड. प्लास्मोडियम. ओके नो इश्यूज. ओके आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स और एंडोफाइट्स. अच्छा किडनी देयर आर सम वर्म्स व्हिच आर वेरी यस. आंख में लोआ आई वर्म. Class 11 we have taught you. Loa eye worm is there inside your eyes. So kidney do have some of the lungs, they have got some of the worms inside. Human liver fluke, a trematode parasite. What is trematode? It's an order. Trematode. No. Trematode, Turbellariae,
इफ यू रिमेंबर इट, टर्बेलिरिया, उसके अंडर में आता कौन है? प्लानेरिया। सेस्टोडा, उसके अंडर में कौन आता है? टीनिया सोलियम। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 ऑर्डर्स इन क्लास 11 अंडर फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। नंबर 1 is Turbellaria. Turbellaria example, Planaria. What is so very special about Planaria? आप जानते हो, बोलो। Regeneration power. But majority of the platyhelminthes, they are parasites. But this one is non-parasite. This one is free living. Planaria is free living. It's not, it never shows parasitism on anybody. Question or any? Now, Plasmodium, malarial parasite, Sporozoa. जल्दी से प्लास्मोडियम का 4 नाम बोलो। Plasmodium vivax. Plasmodium vivax. Falciparum. Plasmodium falciparum, which creates cerebral malaria or malignant malaria. Then Plasmodium ovale, Plasmodium malari. Plasmodium malari. Okay. Malarial parasite needs mosquito vector. जानते हो आप? This is a vector, female anopheles mosquito, to spread to other host. The life cycles of parasites are often complex, involving 1 or 2 intermediate hosts or vectors to facilitate parasitization of its primary host. The human liver fluke trematode parasite depends on 2. What is intermediate host? A snail and a fish to complete its life cycle. कौन? Which one? Liver fluke. Fasciola hepatica completes the life cycle, and for that they need 2 hosts. One is snail and a fish to complete its life cycle. To complete its life cycle. Yes, we can go on and on because it's not needed. ये information दिया गया है. There are some stages like Redia larva, Metacercaria larva, Cercaria larva. So these are the terms not needed now. Fine. Okay. The life cycle of endoparasites are more complex because their extreme specialization. बोलो, why it is called more, why they have got more complex? Tell me, आपके stomach में acidic secretion होता है या basic? Acidic. pH बोलो थोड़ा सा. Between 2.8 to 4.2. Highly acidic? Highly acidic? अभी highly acidic conditions and highly basic conditions from intestine. They can survive. सब कुछ खत्म हो जाएगा पर एस्करिस वहीं पे रहेगा वो. एस्करिस में क्या है? What is the adaptation that ascaris they have got? They have got thick cuticle. They have got thick cuticle. They have got thick cuticle. Also, they have got thick cuticle and they can secrete some anti-enzymes. They can secrete some anti-enzymes. तो आप क्या रिलीज कर रहे हो? पेप्सिन. वो बोलेगा एंटी-पेप्सिन. So adaptations है, देखो ना एंडोपैरासाइट में. So extreme specialization. They are morphological. What is morphological? बाहर का क्या है? In morphology, what they have got? Thick cuticle. And anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. बोलो उनका reproductive potential ज़्यादा होगा कम होगा? Their reproductive potential is going to be less or more. Why? Because आप तो जब छोटे थे तब मम्मी डॉक्टर के पास जाकर ये थोड़ा सा एल्बेंडाजोल लेके आए. 15 डेज हाफ ले लो, मार दो उनको. नेक्स्ट 15 दिन के बाद फिर से आधा उसका पी लो. तो क्या होगा? वो जानता है क्या कि आप उसको मारोगे, इसलिए क्या बड़ा रखा है? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. सो इट्स गोइंग टू क्रिएट ह्यूज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग सो दैट उनका लाइफ साइकिल बढ़ता रहे, कंप्लीट होता रहे. The parasites which can parasitize only on a single species of host is called host specific parasite. क्या है? host specific parasite. कुत्ते के बॉडी में जो टिक है वो आपके बॉडी में आकर लग सकता है, वो होस्ट स्पेसिफिक है. मतलब आप में कुत्तापन नहीं है. ठीक है? So that means it is a host specific interaction. Host specific interaction. Any issues with this? समझ में आया? Many parasites have evolved to the host specific in such a way that both host and parasite tend to co-evolve. देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है. होस्ट और पैरासाइट दोनों को इवॉल्व कर रहे हैं.
होस्ट पैरासाइट को मारने के लिए स्ट्रॉन्ग पेप्सिन छोड़ दिया। वो सोचा गॉड 10 मारे गए, खबर चला गया उनके लीडर को, लीडर के पास खबर चला गया कि 10 मारे गए। वो क्या करेंगे? एंटी डिफेंस सिस्टम, सॉरी डिफेंस सिस्टम लाएंगे, डिफेंस सिस्टम लाएंगे उसके अगेंस्ट में। सो वो भी दे आर गोइंग टू स्टार्ट सीक्रेटिंग व्हाट? पावरफुल एंटी एंजाइम्स। बोलो समझ में आया क्या उसमें? इसके लिए उनमें कुछ चेंजेस आएगा डीएनए में? हाँ आएगा सर। तो दोनों क्या कोशिश कर रहे हैं? को इवॉल्व करना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सो टेंड टू को इवॉल्व, दैट इज द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म for resisting or rejecting the parasite evolved mechanism to neutralize them in order to be successful with the same host species. बोलो समझ में आ रहा क्या? समझ में आया क्या? So neutralize करने के लिए parasite भी is going to show some changes. So that is very, very important. Clear? So this is about parasitism. Example देखो आ गया, human liver fluke, that is the fasciola hepatica, snail, fish or man. Plasmodium, mosquito and man, lice, human, pigs, dogs, copepods, marine fishes, copepods, marine fish. अच्छा, एक कभी आपने तो देख लिया नहीं, वो तो डिफरेंट है, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, कक्कू एंड क्रो. बट आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर एग्जाम्पल ऑफ शार्क. व्हेन यू हैव सीन शार्क, ऐसा नहीं रियल लाइफ में नहीं, जब वीडियो में देखा आपने शार्क को, तो शार्क के बॉडी में हैव यू सीन सम फिशेस अटैच्ड ऑन देयर बॉडी एट देयर वेंट्रल सरफेस, नीचे की तरफ या ऊपर, बॉडी के ऊपर कभी देखा? सम ऑफ द फिशेस दे रिमेन अटैच्ड विद देम. डू यू नो व्हाट आर दे? They are called sucker fish. Sucker fish. Plate structures. And that is called remora. क्या कहते हैं उसको? Remora. That is an ectoparasite of shark. There is an ectoparasite of shark called remora. Ectoparasite of shark. Ectoparasite of shark. सोचो शार्क का भी पैरासाइट है. हाँ अच्छा छोड़ो तो. So in accordance with their lifestyle, parasites evolve special adaptations, loss of unnecessary sense organs, loss of digestive system. चाहिए? Do you think your ascaris, जो आपका ascaris है, वो कौन सा खाना खाता है? नहीं, जो आपने हजम कर लिया. तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट खाने वाला है ना. गॉट द पॉइंट? सो दे आर गोइंग टू फीड ऑन द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट. सो द नीड ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम गोज ऑफ. नेचर ने क्या नहीं दिया उनको? लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चाहिए उसको. उसको रेडीमेड फूड खाना है. हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाँ ये होगा नहीं होगा? होगा. They have got high reproductive capacity. Presence of adhesive organs or suckers to cling onto the host. So these are some adaptations. क्या होना चाहिए? sucker होना चाहिए. They have some sucker. Yes. ये देखो कक्कू एंड क्रो. What is the example? कक्कू एंड क्रो. क्रो और कक्कू कौन किसके नेस्ट में जाकर अंडा देकर आता है? आप जानते हो, कक्कू. तो इसको क्या कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म. क्या कहते हैं इसको? ब्रूड पैरासिटिज्म. वी विल टॉक अबाउट दैट. द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट, although it needs our blood for reproduction because it transfers the parasites to another host. It acts as a vector. So female parasite क्या है? It acts as a vector. Okay. Now. Again. From you, from your body, they feed on you. Clear? Okay. Majority of the parasites harm the host by, देखो, majority of the parasites harm the host by parasite may reduce the survival of the host. Parasite may reduce the growth of the host. Parasite may reduce the reproduction of the host. Parasite reduce the population density of the host. Parasites may render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. What is the meaning of the last point? न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म में, तो उसको जेरी में ऐसा कुछ है, तो टॉम के लिए जेरी को पकड़ना इजी होगा. जेरी इज सिक, इजी हो जाएगा ना. सो दैट इज प्रेडेशन. गॉट द पॉइंट?
Sandalwood tree is a partial root parasite. Is a partial? Sandalwood tree is a partial root parasite. Tell me the name of the total root parasite. Cuscuta is what? Stem parasite or root parasite? Stem. Stem. Total root parasite? Total root parasite? Anybody who is watching this class can tell me? Total root parasite? Total root parasite. Yes? No comments? Total root parasite. Cuscuta? Now find it out on Google. Total root parasite. Total root parasite. Root parasite Yes. Which one? The organism which feeds on the roots and shows the parasitism. Rafflesia is Orobranchi and Striga. orobranchi and Rafflesia. Rafflesia is what? The largest flower. Is a total Total root parasite. root parasite Hollow parasite. or hollow parasite. How to remember it? Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi is a total root parasite. Rafflesia is a, come on, what is so very important about Rafflesia arnoldi? क्या important है इसके बारे में? It is the largest flower. And what is the analogy? The largest flower on the land is pointed by the largest animal on the land. What is that? Elephant. Okay, Rafflesia is a total root parasite. So R square, total root parasite. Commensalism is the, अच्छा हो गया ना? अरे ये क्यों आया? चलो हो गया. That's all about parasitism. That's all about parasitism. We have done it. No, predation. We haven't done predation. We are yet to complete that predation. Predation. We have done it already. Predation, yes. No, predation is, predation, we have to cover that, predation. Parasitism is over. Amensalism is not here, no? Amensalism, we have completed amensalism, very first class. We haven't done. Achha, strychnine queen, this is very important. Acacia, we haven't done this. This is predation. This is predation. We need to do this. Yes, very, very important. Predation is very important. आ गया हमारे लिए importance of predation. What is predation? Positive? Negative. आप किसको खा रहे हो? गोट को खा रहे हो. तो आपका पेट भर रहा है, गोट का जान जा रहा है. Clear? So predation. So that is it. So positive, negative. Importance of predation. Predation is the nature's way to transferring energy. The goat ने क्या दिया आपको? Energy. Very, very important. So primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, Linman's 10% law, pyramid of energy, हम पढ़ेंगे बाद में. Predation is the nature's way to transfer energy to higher trophic level fixed by plant. Therefore, predator acting as conduits. Very, very important. Series. Conduits मतलब क्या है? Series for energy transfer across trophic level. ठीक है ना? तो आप कौन हो? प्राइमरी कंज्यूमर हो आप या प्राइमरी प्रोड्यूसर हो? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर? secondary consumer. अच्छा, गुड. मतलब आप टाइगर हो क्या? नहीं, ये आप टाइगर ही हो. हाउ? ग्रास और ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. दे आर बीइंग ईटन अप बाय गोट. Primary consumer is goat. You feed on goat, you are secondary consumer. आप भी गोट को देख रहे हो, उधर से टाइगर भी गोट को देख रहा है. So आप दोनों में कंपटीशन है. किसको खाने के लिए? So that means both of you in the same place. That means आप में है ना वो टाइगर वाला चीज. Good, very good. अच्छा, very potential is there. Now, for energy transfer across trophic levels. So when we think of predator and prey, most probably आ गया ना? मैं बुला के लाया इसको. The tiger and the deer that readily come to our mind, but a sparrow eating any seeds is no less a predator. No. Wait. A sparrow eating any seed is no less a predator.
Although animals eating plants are categorized separately as herbivores, they are in a broad ecological context not very different from predator. देखो 2011 नीट 2020 में आ गया ये 2026 से बस में आएगा predator keep prey populations under control. किसका population? Prey population under control. Okay. Plants which are introduced from outside often create ecological imbalance in a new area due to the absence of biological control or competition. So it's very, very important. You want to talk about some of this. But for predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. बोलो अगर prey but for predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. सोचो किसी फॉरेस्ट से आपने किसको उठा लिया, किसका नंबर कितना नहीं. See, but for predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem. अगर कहीं पे डियर का नंबर बढ़ गया किसी फॉरेस्ट में, what is going to happen to the producer? Producer कम होगा, ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा ना. Your deer is going to feed on them. When sudden exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive. When we talk about invasive, बोलो मन में क्या आता है? When we talk about invasive, class 11 का फर्स्ट चैप्टर नहीं, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर में इन्वेसिव वीड का नाम था इन द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो आपके न्यू बुक में नहीं है. What is that? What is the name of that? Water hyacinth. साइंटिफिक नेम क्या है? Eichhornia crassipes. What is the name of that? It is Eichhornia कोचुरीपाना. Eichhornia crassipes. Fine. Eichhornia crassipes. It is an invasive weed. कहाँ का origin का था? It was the origin of Brazil. So Brazil से England, England से कोलकाता, है ना? And from Kolkata to all over part of the India. Why? Because they have, what is the structure? No, it was brought to India for its beautiful flowers, for its beautiful as an ornamental plant. And what is the structure which helps in huge growth of them? See, offset. Offset. We have studied the same in class 11. Offset is the structure. Offset comes under which category? Stem modification. Stem modifications. So stem modification. So offset. So by the help of offset, they can grow in number and start spreading fast because invaded land does not have its natural predators. So invaded land में क्या नहीं है? They don't have their natural predator. So उसका नंबर बढ़ता जाएगा. See, best example is prickly pear in Australia. Prickly pear cactus introduced in Australia in the early 1920s caused havoc by spreading rapidly into billions of hectares of rangeland. क्यों? बोलो. Why? Because इसका कोई predator नहीं था. So what has been introduced? Finally, the invasive cactus brought under control only after a cactus feeding predator. कौन है? Cactus feeding predator? इसको moth. So moth was introduced from its natural habitat. It was introduced into the country. So biological control methods adapted in agricultural pest control based on the ability of the predator to regulate prey population. Predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. क्या बोल रहा है यहाँ पे? Predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. Now think about it. कोई फॉरेस्ट में जाकर आप काउंट करते हो, अगेन वी आर मिसिंग Advita. If he would have been a forest ranger, उसको बोला गया कि देखो डियर का पॉपुलेशन और टाइगर का पॉपुलेशन आपको या लायन का पॉपुलेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा. कौन कोई मेंटेन करता है या वो नेचर मेंटेन करता है? If in a given forest the number of deer is 300 and the number of lion or lioness, not lion, they make their own harem. They have got 30 lioness is to 1 lion. And then this 30 is to 300. What is the ratio? 1 is to 10.
अब कौन ज्यादा है, खाना ज्यादा है, तो लायन बोल देगा कम ऑन लायनेस, उस हर्ड को इधर दहाड़ो वहां पे जाकर, सब तो इधर मेरे तरफ आएंगे, तो वो मुख खुला रखा, लायन केप्ट हिज माउथ ओपन, एक डियर तो आ जाएगा अंदर। सो लायन को क्या खाना मिला, दौड़ के चेस करना पड़ा, सो लायन इज हैप्पी। व्हेन लायन इज हैप्पी, उसका कॉर्टिसोल लेवल हाई है लो है, व्हेन दे आर हैप्पी दे आर गोइंग टू मेट, दे आर गोइंग टू गो फॉर रिप्रोडक्शन। सो आउट ऑफ दैट 30 लायनेस, 5 आ गए स्ट्रेस में इस महीने में, सो ही इज गोइंग टू मेट विद द लायन, इज गोइंग टू मेट विद दैट 5 ऑफ द लायनेस, एंड उनका नंबर बढ़ गया अभी 60, कितना से 60, और डियर का काउंट घट के आ गया 120। व्हाट इज द रेशियो नाउ, 1:2, 1:2। अब बोलो चेस करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? When the lion needs to chase, when the lioness needs to chase, cortisol बढ़ेगा, उनका स्ट्रेस बढ़ेगा, so whenever the stress is going to increase, they are going to stop mating. किस तरह से नेचर मेंटेन करता है लायन एंड डियर का नंबर? गॉट द पॉइंट? डियर का काउंट घट गया, ग्रास का काउंट बढ़ा या घटा? डियर का काउंट बढ़ा। सो डियर इज नाउ हैप्पी। खाना ज्यादा कम, खाना ज्यादा, स्ट्रेस कम या ज्यादा? Stress come, they are going to reproduce. This is how the number of this predator and prey is being balanced by so-called nature. It is not balanced by the forest ranger. Got the point? In the rocky intertidal communities of the, hey, देखो आ गया रॉकी। वो क्या था पहले, क्या था? रॉकी कोस्ट, कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड था। यहाँ पे रॉकी इंटरटाइडल जोन है, इंटरटाइडल जोन डिफरेंट है, याद रखना। इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, द स्टारफिश पिसास्टर, स्टार मार्क दे दो इसको। सो पिसास्टर कम्स अंडर द टॉपिक कॉल्ड प्रिडेशन। देखो यहाँ पे इज एन इंपॉर्टेंट प्रिडेटर, पिसास्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रिडेटर। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड, स्टारफिश का नाम क्या है? पिसास्टर। स्टारफिश को एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में से निकाल लिया गया। When the starfish was taken off from that place, starfish used to prey on some invertebrates, smaller invertebrate के ऊपर वो prey करते थे। The moment the starfish was taken off from that place, some number being 10 species of invertebrate got extinct. Devika, tell me what is the reason behind? Pisaster or starfish, they feed on invertebrates and they are present on intertidal zone of that coast. So in a field experiment, some of the place was chosen. From that coast, pisaster starfish were taken off, removed. And what was seen? That 10 different types of invertebrate, they got extinct. क्यों? Because the number increased. The number of invertebrate, rightly said. The number of invertebrates, they have increased. Why? कौन नहीं है वहां पे? प्रीडेटर नहीं है। तो प्रीडेटर नहीं है तो क्या होगा? The number of invertebrates will increase. खुद में क्या बढ़ जाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगा एंड मरेंगे। और उससे क्या होगा? 10 species of invertebrates they got extinct within a year because of inter-specific, not only inter-specific भी होगा, inter-specific भी होगा। Why? Because there are some different types of invertebrates also which used to be eaten up by the pisaster. So inter-specific competition is going to increase and ultimately 10 species of invertebrate they got extinct from that they got extinct from that place. If a predator is too efficient, and overexploits its prey, then the prey might become extinct. And following it, the predator will also become extinct for the lack of food. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन देखो, predator efficient है और इतना efficient है, बोलो आप जैसे efficient जैसे आप हो, हिल्शा एलिशा, टेनुलोसा एलिशा, हाँ वो पुराना नाम है। हिल्शा एलिशा is a old name of Ilish March for Bengali. That is Tenulosa elisha. Now, आप ज़्यादा खाते हो कम खाते हो?
आपके लिए फेवरेट है, तो जिस रेट पे खा रहे हो तो क्या होगा, हाँ, तो वो तो कहानी में पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन कहानी में पढ़ेंगे। इलिश माछ नाम का कुछ माछ था, कुछ फिश था। सो इन दैट केस गवर्नमेंट ने क्या बोला कि छोटे मछली और ये जो छोटे मछली को नहीं पकड़ना है, लेट देम ग्रो। सो थिंक अबाउट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो वो नहीं मिलेगा आपको। फाइन, सो दिस द रीजन व्हाई predator in the nature are prudent. Okay, Babu? So that's all. For plants, herbivores, or predators, nearly 85% of all insects are known as phytophagous. What is phytophagous? Feeding on plant sap and other parts of plants. The problem of predation is particularly severe for plant because they cannot run away from their predator. Plant देख रहा है, गोट आ रहा है, बोलो भागेगा? ओके, सो दैट इज इट। सो वो ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ससेप्टेबल हो जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे। प्लांट इवॉल्व्ड एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल। सो प्लांट भाग नहीं पा रहा है तो प्लांट बोला चलो कुछ केमिकल बनाए ताकि गोट ना खाए मुझे, गोट खाएगा तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। सो वो प्लांट का नाम क्या है, कैलोट्रोपिस। I think we are going to talk about that. They have got cardiac glycosides. Plant evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against herbivores. Defense against predation. Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. क्या क्या है? Let's talk about this. Monarch butterfly is highly distasteful. क्यों? To its predator. कौन है predator monarch butterfly को? खाता कौन था? Bird. बोलो ऐसा butterfly का नाम बोलो. It's not butterfly. moth का नाम बोलो. We have talked about in the chapter evolution. Beeston? That was a moth. So ये butterfly है, monarch butterfly. Fine. Because of a special chemical present in its body, butterfly acquired this chemical during its caterpillar stage. So butterfly caterpillar stage में poisonous weeds को खाते हैं ताकि उसके बॉडी में वो केमिकल आ जाए, and the chemical is highly distasteful. तो उससे क्या होगा, बर्ड्स नहीं खाएंगे किसको, monarch butterfly को। Thorns of acacia and cactus are the most common morphological changes, है ना? Acacia और cactus are the most common morphological means of defense. So ये था morphological changes. So किस तरह से वो बच रहा है, by making what? Thorn. Thorn is the modification of leaf or stem. No, spine is the modification of spine is the modification of leaf. तो यहाँ पे thorns of acacia and cactus, ये thorns होना चाहिए था cactus का या spine होना चाहिए था? Cactus में क्या है? Come on, you tell me this. Good. ये अगर उसका green color का structure है, having this kind of spines. So these spines were modified. They are modified leaves. So they have reduced in size. Why? Structure. To reduce transpiration. What is this green fleshy part called of cactus? It is phylloclade. What is it? Phylloclade. बाबू यहाँ तक क्लियर है। Calotropis produces highly poisonous, very very important, cardiac glycosides. Therefore, cattle do not browse on this plant. So Calotropis, they make some chemicals which are cardiac glycosides, and that can, if a particular animal feeds on them, they will die out of cardiac arrest. So cardiac glycosides. Therefore, cattle do not browse on this plant. Chemical substances, secondary metabolites. Tell me the topic where you have studied about secondary metabolites. बोलो, chapter का नाम बोलो. Class 11. Biomolecules. Like nicotine, caffeine, quinine, strychnine, and opium, etc. are produced by plants actually as defense against grazers and browsers. Grazer and browsers. अच्छा, क्विनिन क्या है? What is quinine? Malaria. Very good. Very good. That's all about competition we have all done. Okay, let us start with some of the questions. That's all about this chapter. Let us start with some questions. Come on. Try this out. छोटो करो. Option है अच्छा ना. Okay, चलो. Last year question. This is the last year question. हाँ, come on. Last year NEET question. बोलो. Fig and wasp. Is the first statement right?
Is the first statement right? Yes. Yes, yes. Fig fruit is a non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasp in it. Right or wrong? Right. Is it? Non-veg हो गया fruit. उसके अंदर इंसेक्ट है इसलिए वो non-veg fruit हो गया. Statement is wrong. Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as a fig wasp completes life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp. बोलो. लड़ाई में से ना बोले but No. Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship. Two is correct. As the fig wasp completes life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp. statement पूरा ठीक है. D. Option D. ये राइट है. Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig. ट्री है ना. Fig the fruit. है. फिग ट्री लिखा है तो क्या बोल छी. Exhibit, mind you, in NEET every word is important. And fig tree exhibit mutual relationship as a fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp Completes its life cycle. or some part of the life cycle. Some part. That's it. So what is the answer? Both are incorrect. Close calls. It was very, very good question. Chalo, next. Epiphytes. Commensalism. Epiphytes, commensalism. Chalo, no need. No need. Very good. Easy था. चलो ये करो. करो. Yes. What do A and B represent in the following population growth curve? This is A, D and dt is equal to R and B is D and dt is equal to R and K minus N by K. It's unlimited. Which one is? A resources unlimited. अच्छी करो. A represents exponential growth when responses are not limiting. Resources होगा. Resources are not limiting the growth and B represents logistic growth when responses are limiting the growth. Which one? A. ठीक है. देख लो ठीक से. अरे मेरा फोन ओटा A represents exponential growth. ठीक है. When responses are not limiting. exponential growth, but when the resources B. हाँ? B. A represents logistic growth. exponential. No. A represents exponential growth. A B नहीं होगा. C. A represents carrying capacity. No. A represents exponential growth when responses are not limiting. And B shows carrying capacity. A represents exponential growth when responses are not limiting the growth and B represents logistic growth when responses are limiting the growth. What is the answer? A is the answer. A is the answer. करो इसको. Sexual disease of office. Option D. Option D. A2. D হচ্ছে Predator. Predator is Pisaster. Very good. Mutualism is female wasp and pig. Parasitism, Parasitism, Plasmodium, sexual disease. What is the answer? D. D is the answer. Chalo, very, very important. Very, very important. बहुत छोटा. Wait. और नहीं होगा बाबा. इसको थोड़ा. चलो. करो. Migratory flamingos and resident fish in South American lakes. competitive release. Competitive release. No, interface. না কম্পিটিটিভ হচ্ছে বিএডটা 5 closely related species of warblers feeding on different locations on the same tree. Competition. That is resource partitioning. Okay. Chathamalus expands its distributional range in the absence of bananas. বি করবে Chathamalus expands its distributional range in the absence of bananas. এটা competitive. This is competitive. C2. C2. বি C2. Wait. A3. বি A4 হবে. Interspecific competition. A4 অপশন বি হবে Abingdon tortoise became extinct after introduction of goats in their habitat. Come on, Abingdon tortoise. competition. Interference competition. B is the answer. B is the answer. দুটো অপশন দেখতে হবে বাকি অপশনগুলো Clear? Very good. Plants offer rewards. Plants offer rewards to animals in the form of pollen and nectar and the animals facilitate the Mutualism. Figure. No, officer is Exactly. Mutualism is the answer. For chemical defense against herbivores, Trichotropies has
With cardiac. Cardiac glycosides. If there are 250 snails in a pond, karo. হয়ে গেছে হয়ে গেছে What is the meaning of হয়ে গেছে? হয়ে গেছে? Really হয়ে গেছে? If they are 250 এবার আমাদের হয়ে গেছে and within a year their number increases to 2,500 by production, what should be their C? Great. How? এ বাবা আমাদের নেই What is the initial one? বাবা বললো ও 250 snails in a pond and within a year their number increases to 2,500 by reproduction. 10 হবে So 2,500 minus নরমাল ছিল minus 250 আরে এটা কি ভাই 2250. ঠিক ঠিক What should be their birth rate per snail per year? Rate of birth পার্সোনাল পড়ে per snail per year. What is the count now? বার্থ রেট How many? What is the increase? 2250 is the increase. Initial is what? 250. What is the answer? না Final is what? 2,500. Initial is 2,250. This is what is now remaining. Out of what? 250 So 250. This by 250 will make you what? 9. Clear? Which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics? अरे ये बात तो हमने भी बोल I have also forgot to tell you this. What is this? Antibiotic, think about it. Staphylococcus aureus. Alexander Fleming was culturing on Staphylococcus aureus bacteria, and suddenly what happened? Penicillium notatum. They started secreting what? Antibiotic. So for Penicillium notatum, they have no idea, zero. But who got killed? Bacteria got killed. So एक के लिए neither harmed nor benefited, but other one gets harmed. This relationship is called amensalism. So antibiotics मतलब? Got the point? The best example of this was antibiotic. अच्छा, next one. Which of the following plants shows a very close relationship with the species of moth? Yakka. Yakka. अच्छा, ये बोलो asymptote. Just now we have talked about. K is equal to n. Asymptote velocity growth curve. कब हो जाएगा k is equal to n? When is going to become k is equal to 1? N. Come on, this is the condition. This is the condition. When k reaches n, then it is called k is equal to n. Then dn dt is equal to 0. Okay. Micro is an example of mutualism. I think that's all. আর কিছু আছে দেখি? Yes. Gaussian principle of competitive exclusion. करो उसको. States that Gaussian principle of competitive exclusion states that তাহলে ডি হবে A but D I guess C C is the answer. No two species can occupy the same niche indefinitely. Wait. Indefinitely for the same limiting resource. হবে না Indefinitely, no? indefinitely বলে Okay. When does the growth rate of population following the logistic growth equals 0? dn dt is equal to rn 1 minus n by k. by K equals to 1 If when n by k is exactly 1, then it becomes 0. Clear? Answer A is the answer. Which of the following is correct for R-selected species? আগেরটার অপশন কি ছিল আগেরটা means আগে উপরে ঠিক করতে গস গস গসেনটা Gaussian C? Indefinite? Wait. Just have a look. No two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resource. Which of the following is correct for R-selected? দাদা Small number of progeny with a small size or large number of offsprings with small size? C small size C is the answer. C is the? Clear? Okay, that's it. C is the answer. Large number of progeny with small size and they have got short lifespan. That's all about this chapter called Organism and Population. So what is the next topic going to be? Next chapter, ecosystem. So start solving questions. Okay? That's it for today. Any doubt, Babu? Chalo, that's it. এখন শুধু মক টেস্ট হবে তো তাহলে দেখবেন একটু ফটো ক্লিক করতে Mock